हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी हब बाय सीता। हमारे आज के लेक्चर में हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सोर्सेस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेदर यू आर स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर एंड वांट टू नो अबाउट वेयर द मनी कम फ्रॉम इन द बिजनेस, then this video is very essential for you. So let's get started. We can classify the source of finance on the basis of the duration, ownership, and source. On the basis of duration, long term finance. Long term finance is also known as fixed capital or a long term capital, means those capital which is used for a long time period के लिए. It is used to create the production facilities or the purchasing of fixed asset like plant, machinery, building, furniture, and etc. As a term as long term finance, it is required for 5 year or more than 5 year. This is used to create a finance of fixed asset like plant, machinery, land, building, furniture, and etc. And it is used to create a long term finance is in creating fixed asset and help to generating revenue. Means जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं उसमें हमें सोचने का टाइम मिलता है कि हमें क्या खरीदना है और किस मशीन को फिक्स कराना है, और ये हेल्प करता है इन जनरेटिंग रेवेन्यू में. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये क्रिएट कर सकते हैं थ्रू शेयर के साथ, डिवेंचर के साथ, और रेज कर सकते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ. Medium term finance. As a term as medium term finance, it is required more than 1 year and less than 5 year, thus is known as a medium term finance. And this finance is required for introducing or to modernize the plant and machinery. And this finance is basically used by manufacturing industries for medium term funds के लिए. Short term funds, short term finance. Short term finance are those funds which is used for short term time period के लिए, and as a working capital it is generally required for 1 year, and the main financial assets are used like such as cash, debenture, inventory, and prepaid expenses are included in a short term finance. And we use as the feature of the main short term finance are that it is required to meet day to day expenses and the need of the business, and it is generally known as working capital. On the basis of ownership funds, honor funds as a name suggests, it is used like जो भी हमें कमाई हुई है, जो भी बिजनेस में कोई भी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, उसको एज अ इक्विटी शेयर और रिटेन प्रॉफिट की तरह हम जो है यूज़ करते हैं. एंड रिमेन ये हमेशा बिजनेस में रहती है. एंड द ओनर, जो ओनर होता है बिजनेस लाइक सीईओ होते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं कि कितना हमने खर्चा करना है ताकि हमारा बिजनेस जो है वो आगे चल सके. इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी और रेस नहीं होती है बाय एन ओनर्स फंड्स, ठीक है. Borrow funds. Borrow funds are those which are creating or credit from public, commercial bank, financial institutions. And borrow fund also included public deposit, bank loan, loan from financial institute, and etc. The main feature of borrow funds, it is at टेम्प्रेरी सोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स जो थोड़े समय के लिए होता है बिजनेस में. एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस वो कहलाते हैं जो हम खुद बिजनेस से जनरेट करते हैं थ्रू आर इनकम और पर्सनल सेविंग से, विच इंक्लूड यूज ऑफ ओन मनी फॉर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप, सेलिंग ऑफ एसेट, सेलिंग ऑफ अनयूज गैजेट, ऑल गियर टू बाय द बेटर इक्विपमेंट. एक्सटर्नल सोर्स जो हम बाहर से लेते हैं थ्रू स्पॉन्सरशिप, मीन्स बाहर का कोई आदमी और कंपनी आके हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लाइक कंपनी पे फॉर द फीचर ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. लोन एंड क्रेडिट मीन्स पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड फॉर इक्विपमेंट्स. इन्वेस्टर एंड पार्टनरशिप मीन्स कोलैबोरेशन विद समवन हु इन्वेस्ट द मनी फॉर देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू. So choose your own source of finance, and on the basis of various factors like risk control and management,
एंड इफ यू डोंट वांट टू गिव द ओनरशिप देन इग्नोर इक्विटी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द बेस्ट फॉर अ स्टार्टअप।